Just checking how this works. This is fantastic. Okay, I think I have gone live. Yeah, I've gone live and I'm waiting. Someone seems to have joined. May I know who's that? Comments. Okay, I think it's myself. Okay, it's myself only. So two persons have joined. Okay, so oh, hello Nishant. Good evening. Oh, good to see you again. तुमने पहले ही 4:15 बजे लॉग इन किया था ना? हाय सिराज कुरैशी, गुड टू सी यू, वेलकम निशांत, सिराज, वेलकम। कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? गुड, गुड, गुड। सिराज, वेयर आर यू फ्रॉम सिराज? निशांत, आप तो जबलपुर से हो, दैट्स गुड। गुड। शौनक हैज आल्सो जॉइंड, वेलकम शौनक, नाइस टू सी यू हियर, गुड इवनिंग। वाओ, नाइस। निशांत फ्रॉम मध्य प्रदेश, सिराज फ्रॉम आई डोंट नो, सिराज कहाँ से हो आप? And Shaunak, I think, is from Calcutta. Swapnil Pathak. Hi, Swapnil. Swapnil, you're from Nagpur, na? Oh, good. Assam. Wow. Very nice. From all over India, we have got a good network of friends now here on Legal Inspiration, isn't it? So, if any one of you want to come live on screen, it's possible. Hello, Prajakta. Pune. Lovely. Yes, Shaunak, I know you very well, dear. You are from Kolkata. You are a wonderfully motivated young boy. Yeah, that's right. थोड़ा सा कुछ दो तीन लोग लाइव आते हैं अगर मेरे साथ तो और मजा आएगा। What I'll do is मैं एक लिंक देता हूँ आप सभी को यहाँ पर। वो लिंक आप अगर क्लिक करोगे, just try. It may be possible for you to come live on screen so we can have a direct chat which others can also watch. Swapnil, welcome, dear. You joined my live stream today. Happy to see you here. तसे तर आपण नेहमीच भेटतो बऱ्याचदा, but meeting here is something different. Wonderful. So if you click this link ना, देखो, I'm showing you this link. इथे मी यहाँ कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ मैंने, streamyard.com/6 something something. So if you click that link, you may be able to come on screen. But doesn't matter. Till the time you choose to come on screen, we can have chat on different topics. So this is specially for my young lawyer friends that I have arranged today. So how are you all doing? Nishant, are you practicing exclusively at High Court or what? And please introduce yourself. Please go on typing. I would love to see your comments in the comments box, friends. And who's that? Prajakta. कुठे practice करता आपण? Prajakta. Shaunak, you must be in the final year, na? Now? Awesome. Yeah, welcome.
Practicing in High Court as well as District Court. Oh, good. One must practice in District Court in the initial days. Definitely, that's good. And Krishna, welcome. Welcome, Krishna. Prajakta, okay, you don't practice. You have your DBK is in Pune, Shivajinagar District Court. Okay. So you are not a law student even, Prajakta. You seem to have a case. So you are interested in chatting with lawyers. Okay, that's good. Welcome. So let's wait for 2, 3 minutes again. I mean, we are of course there waiting for all. There is nothing specific. Today I have come just to meet you all, young lawyer friends, and there is no specific topic that I have in mind. We can just go about chatting on any topic that we can find out from the comments. Welcome, Bhagwan. Yes, Bhagwan, I've seen your comment. Mahendra Singh Rathod. Welcome, Mahendra. Okay, Prajakta, you are not a student. No problem. No problem. Yes, Prajakta, you can ask some questions. No problem. But see, basically, today's live chat, the purpose is to interact with young lawyers, but still, okay, throw your question. Let's see. We have now 5, 6 lawyers here, young lawyers. Let's see, they may also be able to answer your question. Okay. So Mahendra Singh Rathod says, "Sir, I'm not in this field, but your advice is very helpful for me about my writ petition." Yeah, thank you. Thank you, Mahendra ji. हाँ, writ petition पे भी videos of course डाले ही हूँ मैंने. That's my favorite field of practice, writ side. So the videos are bound to be there on writ side. आणखीन और भी videos मैं डालूंगा on the finer aspects of writ petitions which I have not yet covered. तो वो तो videos आते ही रहेंगे. Yes, Nishant, Shaunak, Swapnil. Okay, so nobody interested in coming live with me. I've given you the link here. Just click the link and see if it's possible. Yes, Prajakta, आपका क्या question है? Um, पूछिए. Nishan, thank you so much. Thank you so much. Expression you interpret the laws. See, uh, interpretation, yes, of course. हम जब काम करते हैं कोर्ट में, उसके पहले स्टडी करते हैं, हम अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर interpretation of the particular provision. And ultimately, of course, it is for the court to either agree to it or to disagree to it. But the thing is, we try our best to give a particular meaning or dimension to some provision of law. Okay, Krishna, welcome, Krishna Agrawal. You have done your 8 month practice. Wow, lovely. Sir, please guide me. Can I get paid an internship? Okay. तो देखिए ये पेड इंटर्नशिप्स कहीं-कहीं है, मुंबई में वगैरह या बड़े शहरों में है बेटा. बट आई डोंट नो. एवरी लॉयर हैज़ इट्स ओन हिज ओन वे ऑफ ट्रीटिंग इंटर्न्स. तो आप देखो कहाँ पर है. मेरे पास तो इंटर्नशिप आपको मिल सकती है बट यू सी आई बिलीव इन what I believe in giving learning as a price, you know, direct rather than directly giving money to interns. I make them available the learning experience in my office. That's the thing. Okay.
Mohanlal ji, welcome. Okay, so that's your question, Project. You were awarded with interim order, but the opposite side party went to Sessions Court to decrease the maintenance. So there also it was rejected. Now they have filed a petition in High Court. Okay. Okay, so congratulations. Twice you have got a favorable order. And the other side is in High Court. Now see, everyone has a right to exhaust the remedy that is available to that person. So now that they have dragged you in the writ petition, fight it. There is no other option. Twice the decrees for maintenance was rejected, so they went to Bombay High Court. Okay. What would be the further process? Process is simple, beta. The process में अभी क्या होगा? Hearing होगा. Admission stage पर hearing होगा. अगर हाई कोर्ट को उनके केस में कुछ मेरिट्स लगे इन एडमिशन स्टेज पर तो हाई कोर्ट में go on further hearing the matter and may dispose of it on merits. और अगर उनके केस में पहले ही कुछ दम नहीं लगा तो डिसमिस भी कर सकते हैं। तो आगे क्या होगा मतलब एडमिशन हियरिंग स्टेज का एक वीडियो मैंने बनाकर रखा हूँ अपने चैनल पर, वो देख लीजिएगा। Prajakta ji will get the answer. Tanmoy, welcome. How to get started in a senior's chamber without contacts as a junior. Okay. Should not be that difficult. Uh, just keep meeting seniors. Introduce yourself to them. Express your interest. Okay, welcome Shaunak. Aha, Shaunak is on screen. Hi, Hello, कैसे sir. हो? Hello I'm fine. Shaunak, nice to see you on screen. Lovely. Six persons can come on screen. So whoever is interested, just click the link that I am giving here and we can have a chat. So Tanmoy, good that you are interested in doing juniorship. So please go and interest. Someone will definitely allow you. Who else has joined? MS. Welcome MS. Ajit Sid. Welcome. विनोद जी नमस्ते विनोद जी आ गए वेरी गुड वंदना वेलकम लॉ स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलोर हाउ कैन आई इम्प्रूव माय लॉ स्कूल लाइफ ओह गुड लॉ स्कूल लाइफ शौनक तुम फाइनल ईयर में हो ना बेटा Yes, sir. I'm in my final year at present. ओके सो कैन यू हेल्प वंदना वो पूछ रही है आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलोर एनी एडवाइस ऑन हाउ कैन आई इम्प्रूव माय लॉ स्कूल लाइफ हाउ वाज Improve my law school life. Is that the question? she wants to know how can she improve her law school life Okay, actually, sir, so that's a bit difficult for me to answer because I have only experienced 1.5 years of my life in law school because of the coronavirus Oh, pandemic. okay, okay, So that's a bit difficult to answer. I would say that okay, you can do, like, you can engage in recreational activities in tandem with improving your lexicon and knowledge pertaining to the legal discipline. Like, the subject of law, the discipline of law is such that it gives you ample time to engage yourself in various recreational and entertainment activities, along with uh, developing a good knowledge pertaining to the legal discipline. Side by side, you can do both the things. Oh, So good. So there should be a balance between there studies should be a and balance. other aspects of the life. That's what you want to say. Yes, That's exactly, good. sir. That's Exactly. good. Really good advice. Vandana, The are you there? You are listening. Yes, go on. You want to say something more, Shauna?
No, that's what I wanted to say, sir. Like the law school curriculum has been set in such a way that it provides ample time to the students, the legal aspirants, to have a personal life balance in tandem with working, or in tandem with improving their professional skills, especially in the law school. However, after one joins practice, the story is a bit different. But still, the law school curriculum is very balanced, in my opinion, sir. Oh, good. So, Vandana, see, your central, see, when you are in law school, what I think is your central focus should be on gaining knowledge of law. And that should be the central focus. But side by side, as Shaunak said, you should also indulge yourself in certain extracurricular things and must enjoy college life. अब ये कोरोना के वजह से तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था सभी को, जैसे शौनक ने कहा, जस्ट 1.5 years you could enjoy law school life, but बाद में तो बस ऑनलाइन ही रहा, but now it's opening ना, अभी कॉलेज खुल गया है कि नहीं शौनक? हम्म? Yes, sir. The college has finally reopened, but the fact is that like only 6 months to go. So nothing substantive would happen, in my opinion. Okay, so you will be then out finally, Yeah, final year. yeah. Finally, in the month Oh, of by the month of September, I would end up as a graduate, law graduate. oh, good, good. It doesn't matter, जो हो गया अभी, Yes, sir. जैसे भले 1.5 साल कॉलेज लाइफ मिली हो, फिर भी नाउ सी आफ्टर यू एंटर द प्रोफेशन अगेन योर लर्निंग स्टार्ट्स, इट्स नॉट दैट आप पूरा राइप होके निकलते हो और प्रोफेशन में यू आर जस्ट रेडी टू हैंडल, रादर योर लर्निंग स्टार्ट्स देयर, यू अगेन नीड टू गेट सैचुरेटेड इन द प्रोफेशन इन इनिशियल फ्यू इयर्स, है कि नहीं? Yes, अनलाइक absolutely. डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कैसे ऑलमोस्ट तैयार होकर आते हैं एंड दे आर रेडी टू ट्रीट, बट यंग लॉयर्स का वैसा नहीं है लीगल प्रोफेशन, आने के बाद और सीनियर के चेम्बर्स में उनको सीखना पड़ता है सो मेनी थिंग्स लाइक drafting and preparing a case, talking to clients and arguing cases, so many things they have to learn. Offline, Vandana, what is offline? You want to come online, so please you can. See, यहाँ पर मैं एक लिंक दे रहा हूँ सभी को, six persons can come online. So basically, this is, I would like young lawyers to come online here, so we can discuss so many things. और कौन-कौन आया while we were chatting? M.A. Malik ji, welcome. Where are you practicing, sir? I'm Delhi-based lawyer. Wow, Malik ji, welcome. Delhi-based lawyer. Due to COVID, I left Delhi in 2020. Now I'm searching. इसका मैं यहाँ पर डाल देता हूँ. Okay. Searching senior advocate for practice. Could you help in this? I would have loved to help you, but then see, हर एक को अपनी खुद की help करनी पड़ती है बेटा. अब see, you left Delhi and then uh, where are you deciding to go? I don't know. What are your plans? सर सीनियर तो मिल ही जाएंगे, कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी से पहचान से सही सीनियर तो मिल ही जाएंगे. शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग. सी टू बिगिन विथ यू जॉइन समवन, ऐसा नहीं कि अभी अपना आपका जो डिजायर्ड सीनियर है वही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है हमेशा. तो पहले जो भी आप एंकर कर लो, किसी के साथ भी आप ज्वाइन हो जाओ, कुछ समय उनके साथ काम करिए एंड कीप एन आई ऑन दैट सीनियर विद whom you really want to practice. Develop some a relationship with him and try to get into his office then, जिनके साथ आप काम करना चाहते हो. Otherwise you will be just left in the lurch, तो वो ठीक नहीं. Okay, so Aditya Singh Bisht, hello, welcome. Kaide Pandit, oh what a beautiful name. Kaide Pandit, welcome. And Shreya Gambhir, welcome Shreya. Shreya is asking some question. 138 में केस कर रखा है, अब उसने उसे चेक चेक पर सेक्शन 420 पर भी केस कर दिया है, क्या वह ऐसा कर सकते हैं? तो श्रेय जी, थोड़ा सा हम आज ना हम यंग लॉयर्स लोग बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा
ये जो ये क्वेश्चंस है ना वो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा माफ़ करें। आपका क्वेश्चन मैं कभी और ज़रूर आंसर करूँगा। आप मेरे चैनल के किसी कमेंट में डाल दीजिए ये क्वेश्चन, मैं देख ही लूँगा उसको और जितना जल्दी हो सके उसका जवाब दूँगा। टैलेंट की पुकार विद जीपी वेलकम, whoever has joined. Aditya Singh wished try to bring more videos on service matter and different nuances of service users. Yes, Aditya ji, that's a good suggestion. And today itself, I have uploaded one more video. I mean, the second part of the video on recruitment process. You have seen that by now. आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है. You know, Sunday is my video uploading day. Sunday second half, I always keep available for this activity. Connecting with my, I mean, uploading the video, shooting the video, editing it, uploading it, all these things. The school has started classes offline. Okay, that's what you mean to say, Vandana. Yes, that's good. That's good. So you should be happy and make full use of your college life opportunity, Vandana. Now, yeah, as I said, your central focus should be on gaining knowledge of law. Complete. Don't miss anything. Be really a good student. देखो, the very purpose of being in law college is to gain knowledge ना. If we don't do that, तो फिर क्या किया? हमने अगर वो नहीं किया तो क्या किया? दूसरी चीजें करते रहें. Of course, दूसरी चीजें भी important है. There has to be work-life balance, study-life balance. You must take interest in other activities. The first love should be law. You know, we had a teacher. He always used to tell us one favorite line: "Love the law." I still remember that. Love the law. So that's how it helped in loving your subject. And it is really enjoyable. Studying law is really enjoyable. Swapnil क्या पूछ रहे हैं? Kindly tell us about importance of carrying out research before drafting any matter. Yeah, that's a good question. But Swapnil, आप ही तो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो. You must be knowing the answer to this question very well. है ना Swapnil? Okay, still for the benefit of others, we can um, discuss this. Importance of carrying out research before drafting any matter. Certainly. Uh, देखो मैटर कोई भी ड्राफ्ट करने के पहले एज आई सेड इन माय वीडियो अगर आपने देखा होगा ट्रेनिंग वीडियो नाउ आई एम टॉकिंग टू ऑल माय यंग लॉयर फ्रेंड्स हियर आई हैव uploaded one exhaustive video about 47 minutes video uh, giving training on drafting तो ड्राफ्टिंग करने से पहले सबसे पहले वहां वहां होती है एक प्रिपरेटरी स्टेज और प्रिपरेशन में आता है रिसर्च यू नो रिसर्च कौन सा अब जैसे there are certain things you should have before you start to draft any case. First thing is you should have facts. Facts you should have already collected either from the mouth of the client or from the documents that the clients give you. The documents may contain some deeds or maybe some orders of some courts or some letters, something like that. So facts gather karne ke baad, you have to study the area of law, and there comes that point of doing research. After you gather the facts, you have to figure out to which area of law it belongs. And after you determine which area of law it belongs, वहां पर तुमको research carry out करना. Because unless you carry out research, you will not be able to build the points that are required to be built for having a favorable verdict. So research, when you carry out research, कैसे करते हैं research? First, you study the basic provisions in the bare acts. If the law is codified, it would be available in the bare acts. Bare acts की relevant provisions अच्छे से पढ़कर वो provisions का क्या interpretation किया है courts ने, क्या case laws उसके बारे में available है, वो search करके
I mean, Ajit, I'm sorry, Ajit is joining. Hello. Welcome, Ajit. So, वो research, मतलब with all its interpretations, you learn that provision first. You find out case laws, and you also study all the related aspects of that matter. So, facts, rare acts, case laws, and with complete understanding of all these things, you make out points of your case. You note down the points, and then you draft. That is the process, rather. Someday we can go into the details of these aspects. But this is how it has to be done. If you want to add anything more, Swapnil, you are welcome. अजीत अजीत सिड अजीत ने क्या पूछा है अजीत आपने सॉरी अजीत बोलिए आप क्या नमस्कार प्रश्न सर। हेलो हाँ हेलो नमस्कार अच्छा सर। अजीत आपका कोई नमस्ते नमस्ते अजीत जी सर मुझे एक क्वेश्चन था, पूछो क्या? हम्म। हेलो हाँ सर। अजीत जी मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न मैंने पढ़ा यहाँ पर हाँ अ, सर, मैंने देखिए देखिए मेरे को हेलो थोड़ा सर। सा माफ करना आज हाँ हाँ हाँ, चलेगा सर। सर बाद में मुझे रिप्लाई दो। हाँ क्योंकि ना ये आज हम जरा यंग लॉयर लोग मिल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं हाँ हाँ वकालत के बारे हाँ में हाँ सर। मैं सर हाँ तो थोड़ा इसमें डाल दे, संभाल के कमेंट रखना में डाल देता हूँ। कमेंट्स में डाल दीजिए इसको हाँ बाद में मैं दो। देख हाँ लूंगा और थैंक जैसे ही जमे हाँ हाँ जल्द से जल्द हाँ जवाब दे दूंगा हाँ हाँ थैंक यू सर। ओके बाय। इसका यस यस बाय ओके वेलकम रविंद्र जी सर मैं डीजीसी ऑफिस में लगा हूँ बट मैं अभी न्यू हूँ बहुत कम समझ आता है आप ही बताएं कुछ डीजीसी ऑफिस मतलब क्या भाई अरे स्वप्निल वेलकम स्वप्निल you can come online if you wish and you can also add something more you are also quite senior Swapnil now I know you can also help our young friends if you wish I mean okay talent की पुकार okay शौनक कहो और so you wanted to you want to practice at high court no? You said Yes, sir. I want to practice at the High Court in Calcutta. गुड देखिए अभी यहाँ पर एडवोकेट विशाल गडेकर भी हैं वेलकम विशाल उनका एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ वो पूछते हैं कि सर हाई कोर्ट में नए लॉयर्स ने प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी चाहिए ओके गुड ओके देखिए विशाल जी नाउ दिस इज फॉर एवरीबॉडी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना ना एक बड़ा ही मतलब ड्रीमी थिंग लगती है सबको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करना एंड इट इज नो डाउट अबाउट इट और उसमें कुछ गलत नहीं है जैसा सपना रखने में बट सी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू फर्स्ट start your practice from the district court at least for about 1 or 2 years you practice in district court have first hand experience of the trial side and learn all the proceedings there right from civil suit to all the small proceedings whatever is there miscellaneous judicial case and whatnot so civil suit then appeals and civil suit में जो भी है complete stages you learn all of that and then you shift to high court that would be the right thing because you see if you directly shift to high court and if you happen to conduct some case involving say evidence you will not be in a position to understand how the evidence was conducted what are the rules of evidence and what was the admissible part of evidence what is inadmissible और ये सब चीजें आप अगर नहीं समझ पाए हाई कोर्ट में तो इट विल all be meaningless मतलब you will not be in a position to conduct cases in high court very effectively तो ऐसा करने अवॉइड करने के लिए फर्स्ट हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ
वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक एरिया है जहां आप हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे प्रैक्टिस मतलब ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस किए बिना भी काम शुरू कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि उस एरिया में भी प्रैक्टिस करने से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक्सपीरियंस आपको रहे तो ये बेहतर रहेगा। वो कौन सा एरिया है? यू मस्ट बी वंडरिंग नाउ। दैट एरिया इज रिट साइड। यू नो, Constitutional rate. Yes. हाँ, रिट साइड। वो रिट साइड में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यू नीड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चल जाएगा। आप मतलब कर लोगे इफ यू हैव गुड इंग्लिश, if you have mastery over command over language, if your understanding is good, if you are intelligent enough, you can directly start. But with one warning, still मैं यही बोलूंगा कि वहां करना है तो भी आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीख कर आइए, और उसके बाद आप हाई कोर्ट में भले ही रिट साइड में करनी है तो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीख कर ही आप आइए और वो एक्सपीरियंस लेकर ही आइए। हाँ, नो प्रॉब्लम स्वप्निल, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, नहीं आ सकते तो नो प्रॉब्लम। तो दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट। नए लॉयर्स ने प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी चाहिए। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन विशाल, और यू वांट टू नो समथिंग मोर? विशाल इज सेइंग सर 3 इयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस हो चुकी है। अरे गुड, और आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियोस बहुत अच्छे लगे हैं, motivated. Welcome then you already stand qualified. I mean, there is nothing like legal qualification, but then practically you seem to be qualified now to move to high court if you really desire so. So Vishal, what you do is now you join some seniors chamber in high court and start your practice in high court. And in the initial days, what you should do is to know detailedly about the procedure that is followed in high court. Every high court has its rules, especially appellate side rules. If there is an appellate side, if you are working in some metro city like either in Kolkata like अपना शौनक है, या if you are in Mumbai or Madras, they do have original side. Right? So study those rules, understand the practice and procedure of high court, and then start your appearances before high court every day. Grab every opportunity to appear before high court. जितना ज्यादा आप appear होगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस कम है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बूस्ट कर लेंगे। हाँ, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस कम है तो वो बूस्ट करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है ना भाई। देखिए, ये इस स्टेज से मैं भी गुजरा हूँ। हाई कोर्ट में जब प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना जरूरी है, क्योंकि देखिए कैसे होगा कॉन्फिडेंस बूस्ट। फियर होती है ना, हमारे अंदर बहुत सारी फियर्स आ जाती है। एक तो मैं खड़ा होऊंगा तो मैं ठीक ढंग की इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं वहां पर बराबर सोच सकूंगा कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेनी पड़ेगी। The best antidote to fear is action. That is the answer to boosting your confidence. इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश इंप्रूव करो, मगर इंग्लिश इंप्रूव होने तक, वो परफेक्शन आने तक रुकने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? जैसी भी है, you start appearing. Try to communicate with the court in as best manner as possible with whatever kind of English you have, but at the same time keep working on your English. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इंग्लिश की बात है तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश की क्लास लगाओ कहीं, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है, ये स्टेज में भी क्लास लगा सकते हैं। कोई स्पीकिंग क्लब्स ज्वाइन करो, देयर आर मेनी।
लाइक टोस्ट मास्टर्स क्लब, अगर आपने सुना है तो अच्छा है, सुना नहीं है तो आप सर्च करो इंटरनेट पे, आपके सिटी में कोई टोस्ट मास्टर्स क्लब होगा, वहाँ ज्वाइन करो, या कोई और स्पीकर्स क्लब होगा, वहाँ ज्वाइन करो, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, आपका पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डे बाय डे यू विल फाइंड योर सेल्फ getting more and more confident while appearing before the court. एक बढ़िया टेक्निक मैं सजेस्ट करता हूँ. It has got to do something with your mind, you know. Ultimately, things like fear, confidence, ये माइंड में रिसाइड करती है. एक टेक्निक है, टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन. You know, visualization means seeing mental pictures or mental movies in your mind's eye. विजुअलाइजेशन तो हम सभी करते हैं जाने अनजाने में, है ना शौनक? करते हैं कि नहीं? Definitely, sir. Any example of visualization? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ याद कर रहे हैं हम, तो हमारे आंखों के सामने माइंड में एक वो यादों की एक रील चलती है, मूवी रील. तो वो पास्ट की बात हो गई. मैं जो विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, वो विजुअलाइजेशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बिफोर आई कोर्ट, so every day visualize that you are actually standing confidently before the court. Your matter has been called out. You are there. You are standing confidently. You have started arguing your case confidently. जिस आपके माइंड में देखो अपने आप को, विजुअलाइज वो कोर्ट रूम जहां आप रोज जाते हो, वो बार की जगह जहां पर वकील खड़े होते हैं, वहां आप खड़े हो और जजेस की तरफ कॉन्फिडेंटली देखकर आप अपनी बात रख रहे हैं इंग्लिश में. ऐसे विजुअलाइज करो. एंड विजुअलाइज करते वक्त ये फील करो कि while you are arguing before the court, you are quite cool, composed and stable. You are confidently answering the questions of the court. और उसके बाद आपकी केस खत्म हुई, जजेस ने कोई ऑर्डर पास कर दी है, होपफुली दैट इज अ फेवरेबल ऑर्डर, एंड देन यू आर कमिंग आउट. तो ये विजुअलाइज जितना करोगे, आपके माइंड के अंदर अ, वो चलेगी वो बात. You know why I'm telling you? There is one interesting thing about visualization. स्पोर्ट्स पीपल जो है ना, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत यूज करते हैं. यस स्वप्निल, गुड. टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन हैज हेल्प. इट वर्क्स गुड. फ्रेंड्स, ये जो स्वप्निल है ना, मेरा यंग दोस्त है. इज माय माय जूनियर फ्रेंड, आई मीन माय फ्रेंड नाउ इन एट द बार नागपुर में. तो स्वप्निल इज अ वेरी डायनामिक पर्सन, वो यंग एज से ही अच्छा काम करता रहा है. सी ही इज टेलिंग ऑल ऑफ अस दैट टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन हैज हेल्प. इट वर्क्स. ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक जैसे मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स पीपल ये बहुत यूज करते हैं. और इसका साइंस ऐसा है कि हमारा जो माइंड है ना, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट्स, एंड इट मे बी ट्रू ऑल्सो, जब हमारा हमारे माइंड में कोई सीन विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, तो माइंड डजंट अंडरस्टैंड something that is real and something that is not real. It just believes that whatever is being played in the mind is real. तो वो रियल में ही ऐसा हो गया. जैसे मैंने बताया आपको, आपने कोर्ट रूम एक्सपीरियंस अगर विजुअलाइज किया है कॉन्फिडेंट केस करने का, तो माइंड में वो प्ले हुआ, तो माइंड विल थिंक इट हैज ऑलरेडी हैपेंड विथ यू. सो द मोर यू डू, the more it will get embedded inside your head, inside your mind. And it will be as if you have already appeared so many times before the court. You have already practiced appearing so many times before the court. And day by day, you will find that it will be easier for you to actually appear before the court. Whenever you will be appearing, it will be very easier for you to appear before the court because you have already practiced it in your mind. है ना? And that's the science of visualization. इंटरनेट पे सर्च करना,
विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में कई कई सारा मटेरियल है, वीडियोस भी है यूट्यूब पर, so it's really interesting. Observing seniors while arguing, yes, that also helps. That's a good suggestion for me. Thank you very much. Observation. You see, courtroom is the best opportunity for you all to observe. जब भी आप केस नहीं है, कुछ काम नहीं है, best thing to do is to sit inside the courtroom and just go on watching how others, how seniors, especially seniors, are arguing. That is a live laboratory that you have available with you to actually make your observation. जब सीनियर्स आर्ग्यू करते हैं ना, तो देखना कैसे कॉन्फिडेंटली आर्ग्यू करते हैं, क्या लैंग्वेज वो यूज करते हैं, कैसे वो फैक्ट्स रखते हैं, फैक्ट्स का सीक्वेंस कैसे होता है उनका, एज कंपेयर टू अ जूनियर। सीनियर्स कैसे वो पॉइंट मेक आउट करते हैं, कौन सी वोकेबुलरी वो यूज करते हैं, कैसे कोर्ट से इंटरेक्ट करते हैं, हाउ दे हैंडल द कोर्ट्स क्वेश्चंस, कैसे कन्विंस करते हैं, कन्विंस करने के लिए क्या वोकेबुलरी वो यूज करते हैं, वो वो भी ऑब्जर्व कर करके कुछ बहुत कुछ लर्निंग होता है। हम भी ऐसे ही सीख रहे हैं। हमारे वक्त मुझे याद है बहुत अच्छे सीनियर्स थे, अभी भी है ऑफ कोर्स, बट तब यू नो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे ना, जस्टिस बोबडे, वो हमारे सीनियर थे, मतलब नॉट माय इमीडिएट सीनियर, बट वो नागपुर से ही है। ही वाज अ वेरी वेल नोन एमिनेंट लॉयर हियर इन नागपुर। वी हैव सीन हिम आर्ग्यूइंग केसेस। ऑफ कोर्स मनोहर साहब तो थे ही, प्रश्न ही नहीं है। मनोहर साहब थे और बोबडे साहब थे, अने साहब थे, हमारे सुबोध धर्माधिकारी सर थे, अभी भी है, ये सब लोग हैं, बट नाउ दे हैव स्कैटर्ड ऑल ओवर एट अदर प्लेसेस। अने साहब मुंबई चले गए। So we have also watched and observed our seniors arguing so many cases and going on practicing and practicing and practicing. That's how we go on learning, my dear friends. Okay, तो हम ये सब बात कर रहे थे, तो और भी कुछ दोस्त ज्वाइन हो गए हैं। पुखराज राका, वेलकम। पुखराज पूछते हैं जूम ऐप की तरह इससे जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, आपको अगर जुड़ना है पुखराज जी, तो देखिए मैं यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ। देखिए ये दिया मैंने लिंक, ये लिंक आप क्लिक करके ऑन स्क्रीन आ सकते हैं। जो विश निशांत, यस, every time in this honorable senior advocates as well as any young lawyers arguing on dais, they can teach us very well. Yes, उनका परफॉर्म करना ही हमारी टीचिंग है, यू नो, एक प्रकार से वहां वो है, वहां वो आर्ग्यू कर रहे हैं सीनियर्स। ये तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों हमारे लिए, है ना? तो उसका हमने बेस्ट यूज करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ओह, सो नाइस ऑफ यू स्वप्नील। अच्छा, थैंक यू। आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग प्रोसेस। कंटिन्यूअस है हमारे वकालत में ना, कंटिन्यूअस लर्निंग चलते रहती है और बड़ा मजा आता है। We always become better version of ourselves. We try to become better versions of ourselves in this profession. तो वही तो मजा है। थैंक यू सो मच। मिर्जा मोहिउद्दीन बेग, वेलकम मिर्जा जी। मालिक सलमान, वेलकम। राइट ए, ये कॉन्टैक्ट के मामला है। रिट, ओके, रिट, यू मीन टू से रिट, ठीक है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। आज दोस्त हम यंग लॉयर दोस्त मिल रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा ना वकालत और वो उसके वकालत से जुड़ी सब बातें के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो निशान कहते हैं यस सर, ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े इज आल्सो वर्किंग एज चीफ जस्टिस। हाँ, ही वाज बिफोर ही was elevated to Supreme Court. He was Chief Justice of MP High Court. Yes, बिल्कुल, you're right. तो ऐसी बातें हैं। और कुछ शौनक कहो तुम, और सुनाओ।
Yes, sir. One thing which I wanted to ask particularly Yes. is that at times it happens that we don't get ample time to go through the briefs. Like I am presently busy with an internship, engaged in an internship. It so happens that I don't get enough time to go through a brief completely. Like maybe in 1 week I can go thoroughly only through one brief. So what should I do for that? Like what should I do in order to solve that problem? Okay, now can you tell me why it happens? Why don't you get time to go through brief fast? I mean, time to go through the brief. What are the reasons? It I'll particularly answer happens your of the question. fact, yeah, yes, sir, it particularly happens because of the fact that in the court, while I am in the court, I am busy watching and observing the senior advocates making their submissions and presentations. So in the court, during the court hours, I hardly get any time to go through the briefs. And while I am in my chamber, it so happens that like a lot of chit chat and conversations, formal as well as informal conversations go on. So like I am there happens to be a lack of concentration on my part to go through the briefs on a thorough basis. So what can be the solution for that, sir? Okay, as far as that courtroom time is concerned, I quite understand that inside courtroom you may not be able to do both the things simultaneously, watching the senior or watching the courtroom proceedings as well as reading the brief. So that I can understand. But when you are in senior's chamber, as you said, there are so many distractions there, right? Yes. So the answer is already there in your question only, Shauna. How? You said that there are so many distractions. So the answer is that you have to cultivate the ability to avoid all those distractions and focus on the brief, focus on your reading, to concentrate your mind on what you want to read. So how to do that? First thing is by improving your willpower, by making small determinations. Like when you are in the senior's chamber and you have a brief before you, then you must, before you sit to read, अपने आप को अंदर एक कमिटमेंट करो ना अभी थोड़ा अलग टाइप का एक करके देखो एक कमिटमेंट करो कॉन्शियसली कि अब मैं ये ब्रीफ पढ़ने बैठ रहा हूँ और मैं ब्रीफ शुरू करने के बाद इसको खत्म करके ही उठूंगा आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय वॉट एवर डिस्ट्रैक्शन अब ये तुम क्यों करोगे यू शुड ऑल्सो हैव योर वाई क्लियर बिफोर वाई why would you do that unless you have reason a strong reason वो find out करो what is your why it could be see it could be uh, to become a better lawyer in future if that is strong enough then you would definitely be able to do whatever you commit yourself to do getting me are you understanding what I'm saying Yes, sir. you have to find Absolutely. your why are you there in the seniors chamber why are you doing internship ये why जब clear होगा ना that will provide motivation for you to focus on your brief to concentrate on your brief and to avoid distractions avoid chit chatting with your friend उसके लिए एक अलग टाइम रिजर्व रखना बट जब तुम पढ़ोगे तो ये कमिटमेंट करना कि दिस इज नाउ माय टाइम आई विल फिनिश अप द brief दिस इज वन दूसरी बात एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक अब जब सभी दोस्त यहाँ पर है तो वो भी सुन लो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग टेक्निक है इसके बारे में आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा पोमोडोरो टेक्निक आई टाइप द वर्ड हियर तो ये टेक्निक क्या है बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है बट वेरी पावरफुल मैं अपने ऑफिस में इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कंसंट्रेशन से कोई ब्रीफ से काम करना होता है पोमोडोरो टेक्निक मैं बताता हूँ क्या है ये Certain minutes of work followed by a small minute of relaxation, maybe दैट्स गुड दैट्स राइट थम्स अप टू यू 25 is to 5, something of that yes sort. no that go on
बताओ बताओ वो टेक्निक क्या है? 25, like you get hold of 30 minutes. Within that 30 minutes you chalk out a time amounting to 20 minutes, where you do assiduous and thorough study, and you keep the remaining 10 minutes for your own time, like for relaxation or for anything of that sort, and then again the next 30 minutes you repeat the same thing. Yes, yes. मतलब ऐसा कि suppose if you want to work on a brief, say for a long time of say 3 hours, एग्जाम्पल करके हम लेते हैं, 3 घंटा अगर तुमको किसी पे काम कर, किसी का 2 भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। अब देखो कंटिन्यूस 2 घंटा बैठना, ये विचार भी जरा ड्रेडिंग थॉट है, अरे मैं 2 घंटा कैसे करूं। तो ये टेक्निक क्या कहती है कि तुम इस 2 घंटे को चंक्स में डिवाइड करो। मतलब कि अ, एक चंक होगा 25 मिनट्स का, फॉलोड बाय 5 मिनट्स रिलैक्सेशन। ये हो गया 30 मिनट का एक यूनिट, इसे कहते हैं 1 पोमोडोरो। सो 25 मिनट्स काम, 5 मिनट रिलैक्सेशन। और वो 5 मिनट का जो रिलैक्सेशन रहेगा ना, लिटरली यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। 25 मिनट्स खत्म हो गए कि उठना है वहां से, उठकर कुछ भी मूवमेंट करनी है, रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करो, यानी वो काम छोड़ के बस शांत बैठना है, शांत बैठो, चाय पीना चाय पियो, कॉफी पियो। 5 मिनट्स गिव योरसेल्फ, देन अगेन आफ्टर एंड ऑफ 5 मिनट्स नेक्स्ट पोमोडोरो यूनिट विल स्टार्ट। फिर 25 मिनट्स का काम और 5 मिनट रिलैक्सेशन, दिस विल बी 2 पोमोडोरो। ऐसे 2 या 3 पोमोडोरो खत्म होने के बाद देन यू गिव अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ से 30 मिनट्स लॉन्ग ब्रेक। मतलब 25 मिनट्स काम, 5 मिनट रिलैक्सेशन, 25 मिनट्स काम, 5 मिनट रिलैक्सेशन, 25 मिनट्स काम, 5 मिनट रिलैक्सेशन, देन 30 मिनट्स लॉन्ग ब्रेक, एंड देन अगेन 25 मिनट्स काम, 25 मिनट्स रिलैक्सेशन। इस तरह से इफ यू अप्लाई दिस पोमोडोरो टेक्निक, है तो मैंने सिंपल करके बता दिया हूँ आपको, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे और इसके कई सारे एप्स भी आते हैं, वो हमारे फोन में डाल दिए तो वो बराबर वो 25 मिनट्स का वो टिक 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 वो बजाते रहता है, मतलब अपने को सुनाई नहीं आता, बट आफ्टर 25 मिनट्स अलार्म देगा, देन 5 मिनट रिलैक्सेशन होने के बाद अलार्म देगा। एवरीथिंग इज टाइम्ड, वंडरफुल एप्स है वहां पर हमें, वो यूज करो बेटा। तो ऐसे नए नए टेक्निक्स यूज करके अपने आप को हैबिट डालो कंसंट्रेट करने की। तो ये दूसरी बात। तीसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ विच इज वेरी फंडामेंटल, मेडिटेशन करते हो? Yes, sir, मेडिटेशन every करना, day. Yes, sir. हाँ Every करते morning हैं। 15 minutes. लवली, फिर क्या प्रॉब्लम है? यू शुड बी एबल टू कंसंट्रेट बेटर। Yes, सर sir, हमें भी I कुछ over टाइम मिलेगा time. क्या? हेलो, हाँ पंकज, पुखराज जी वेलकम। काका साहब जी जी, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप भी हाँ लॉयर सर है क्या राका साहब? जी, मैंने एलएलबी कर रखा है लेकिन सनद रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ इसलिए, और ओके मेरे खुद के मुकदमे में खुद डील करता हूँ। अच्छा, ओ सो नाइस। हाँ जी, और अभी पहली बार मैंने हाई कोर्ट में इसमें जूम ऐप की तरह मार्फत जो पार्टिसिपेट किया था, मैंने एक मुकदमे में जो 340 के बारे में मैंने कमेंट में भी लिखा था। सीआरपीसी का जो अच्छा, 340 होता है ना सर, हाँ हाँ जिसमें वो प्रोसिक्यूशन यदि कोई फॉल्स एविडेंस मूव करता हाँ है तो राइट। उसमें जैसे मुझे फर्जी तरीके से एक एक्यूज बनाया गया था, तो उसके मेरे सारे सबूत थे ऐसे जो उसमें उसका विरोध कर सकता था मैं। तो मैंने 340 का प्रार्थना पत्र मूव किया था ट्रायल कोर्ट में। उन्होंने यह क्या करके खारिज कर दिया कि अभियुक्त को इसका अधिकार नहीं है। तो मैंने इसका विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्रिमिनल लॉ अच्छा, एनी पर्सन है जो इसको मोशन में ला सकता है चाहे तो फिर इसके लिए मैं हाई कोर्ट मूव किया मैंने, और वहां मैंने ऑनलाइन हियरिंग में पार्टिसिपेट लिया। तो जज अच्छा, साहब ने उसमें विपक्षी जितने भी जो अपोजिट पार्टी थी उनको नोटिस जारी करने का आदेश कर दिया उसमें। अच्छा, मतलब आप सक्सेसफुल हो गए नोटिस जारी करवाने में। हाँ हाँ, 4 वीक्स ओ के नोटिस गुड, जारी किए उनको अपना पक्ष रखने के लिए।
उसमें, हालांकि मैं गुड, एक्यूज हूँ अच्छा, और पहली बार हाई कोर्ट में फेस किया मैंने। हाँ, बढ़िया, बढ़िया। हाँ ये जो है ना, इन पर्सन कहते हैं इसको, पार्टी इन पर्सन, तो ये कैसे पिटिशनर इन कर पर्सन। सकते, पिटिशनर इन पर्सन, तो इस पर भी 2 3 वीडियोस है मेरे चैनल पर, आपने देखे कि नहीं पता नहीं हाँ। मुझे। तो ये इन पर्सन लोग जो करना चाहते हैं उनको गाइड करने वाले दो वैसे तीन वीडियोस हैं। वैसे खैर, सर आपने आपके तो वीडियो अनुभव में ले, अक्सर देखता रहता हूँ मैं। ओह थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हाँ, काफी जानकारी मिलती है मेरे को, अच्छा लगता है। जी जी, और थैंक यू। आप मुंबई में ही रहते हैं ना सर? नहीं, मैं नागपुर से हूँ, पुखराज। नागपुर से है। जी, वैसे अच्छे, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, जनहित के काम करता रहता हूँ मैं इधर उधर। बहुत बढ़िया। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर हूँ मैं। जी, बहुत और वेरी सर नाइस। डिग्रियां तो मैंने बहुत ले रखी है वैसे। ओके। ग्रेजुएशन की 4 5 डिग्रियां मेरे पास। काय की? ग्रेजुएशन की 4 5 डिग्रियां मेरे पास। ग्रेजुएट, बहुत हाँ बढ़िया। यानी ये, आप हाँ सीखने में इंटरेस्ट रखते हो, हाँ, नया नया। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत रुचि है। और हर काम मैं चैलेंज के रूप में लेता हूँ। चैलेंज अगर किसी ने कर दिया तो वो निश्चित रूप से करके बताता हूँ फिर मैं। ये बहुत मेरी एक बढ़िया। खूबी है। तो आज हमें हमारे मैंने यहाँ पर सभी नए लॉयर्स, यंग दोस्त है, ये इस बात को आपसे सीख सकते हैं कि चैलेंज के जी रूप जी में कोई हाँ भी हाँ। चीज लेकर कैसे उसमें हम्म। मोटिवेटेड रह के सक्सेसफुल होना, है ना। अभी सर आपका गुड। बड़ा कीमती वक्त है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, बाकी आपकी पूरी हिस्ट्री बताता मैं कहाँ से उठा हूँ, क्या कब तक कर चुका हूँ मैं। मैंने बीए हाँ, किया, बीकॉम किया, एलएलबी किया, बीएड किया, एमकॉम किया, इतनी डिग्रियां मेरे पास। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, पुखराज जी, करेंगे हम डिटेल में कभी जरूर बात। आज थोड़ा सा जी मैं जी ये जी। हमारे हाँ वो सब मैं भी यंग दोस्तों समझ के रहा साथ हूँ इस बात इश्यू को। करूँ। जी जी। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे मैं यस, कभी का थैंक जुड़ यू। जाता, लेकिन आपका सिस्टम ही समझ में नहीं आया कि जुड़ते कैसे हैं। काफी प्रैक्टिकल कर करके देखा, पर जब जुड़ना आया मेरे से, भाई जुड़ नहीं पा रहा हाँ, था ये मैं ज़ूम आपसे। ऐप नहीं है ना, ये ज़ूम ऐप नहीं है, ये हाँ हाँ, स्ट्रीम यार्ड से है। और यहाँ पर सही 6 है। लोग जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, बाकी चैट पे रह सकते हैं। हाँ हाँ तो अभी तो हाँ हाँ। ये तो और जगह है। नहीं इसका, मेरे को इसका प्रैक्टिकल सिस्टम का पता भी नहीं था ना, कैसे करते हैं ये। तो फिर ये हाँ, अंदाज से संभालता संभालता फिर इसमें एंट्री हो गई। ओके। ठीक तो सर, थैंक एडवोकेट यू। विशाल, ओके, वेलकम। मिलेंगे और कभी जरूर। विशाल बोल रहे हैं, कुछ एडवोकेट्स लंबी आर्गुमेंट करते हैं, कुछ शॉर्ट। क्या लंबी आर्गुमेंट अच्छी रहती है केस के लिए, या जजेस इससे बोरिंग फील करते हैं? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विशाल जी, आपने पूछा है। तो देखिए, ऐसा ना, लंबी आर्गुमेंट या शॉर्ट आर्गुमेंट ऐसे डिसाइड करके कभी होता नहीं। आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये मैटर की कितनी जरूरत है, तुम्हारे सामने की जो केस है, वो पॉइंट्स एलाबोरेट करने के लिए कितने समय की जरूरत है, उस पर निर्भर करते हैं। ऐसे पहले से डिसाइड करके कभी आर्गुमेंट लंबी या कभी शॉर्ट नहीं होती, होनी नहीं चाहिए, सच में बताया जाए तो। और अगर होते हैं कुछ लॉयर्स, कुछ पॉइंट्स को लंबा खींचते हैं रिपीटेडली। तो अगर वो लॉयर्स थोड़े से मिडिल लेवल या और जूनियर टाइप के होंगे, तो कोर्ट्स उनको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर वो बहुत सीनियर लॉयर्स होंगे, तो कोर्ट्स कभी कभी डिफिकल्ट पाते हैं अपने आप को, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो बोर भी होते होंगे तो भी, तो वो थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं सीनियर लॉयर्स को। बट अच्छे सीनियर लॉयर जो होते हैं ना, वो बोर नहीं करते कोर्ट। एनीवे, द पॉइंट इज, अननेसेसरी लंबी आर्ग्यूमेंट कभी करना नहीं चाहिए। आपके मैटर की जितनी जरूरत है, उस हिसाब से आपके आर्गुमेंट बनती जाती है, उतना अप्रोप्रिएट टाइम आप लेते ही हो। तो जितना भी अप्रोप्रिएट टाइम उस मैटर के लिए जरूरत है, उतना आप दो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द मैटर, इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स इन्वॉल्व, इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट के सामने कितना काम है।
जज साहब कितने फास्ट जाना चाह रहे हैं या कितना स्लो जाना चाह रहे हैं, ये सब बातों पर निर्भर करता है आपकी आर्गुमेंट लंबी होगी या शॉर्ट। तो इसमें कोई रूल नहीं है आर्गुमेंट लंबी अच्छी रहती है क्या या शॉर्ट अच्छी रहती है। अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट ही ठीक होती है, दिस इज व्हाट आई वुड से। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये टेक्निक्स की, तो समझ में आया शौनक अभी? हाँ, कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करना। एक और चीज मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, आप जो ब्रीफ पढ़ना चाहते हो जल्दी, आप स्पीड रीडिंग टेक्निक को भी डेवलप करो। एक टेक्निक होती है कि आप कम समय में ज्यादा मैटर ग्रास्प कर सकते हो। इसके कुछ सेल्फ स्टडी बुक्स भी अवेलेबल है, तो भी आप देखो, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सब 3-4 बातें इकट्ठा करके आप ब्रीफ कैसे फास्ट पढ़ना अचीव कर सकते। ओके, और भी दोस्त जुड़ चुके हैं। असाद असाद दाफेदार, वेलकम। वो पूछते हैं मेमो ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या है। ओह, गुड क्वेश्चन। मेमो ऑफ अपीयरेंस का मतलब सिंपल है, जैसे देखिए, आपको अगर कोई क्लाइंट एंगेज करता है किसी केस में और वो वकालतनामा देने की पोजीशन में नहीं है, तो आप खुद होकर, एक फॉर्म आता है मेमो ऑफ अपीयरेंस का, वो फॉर्म भर के वकालतनामा की जगह पर वो मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल करके अपीयर हो सकते हो कोर्ट में। तो यू नीड नॉट फाइल वकालतनामा इमीडिएटली, बट एक बात ध्यान में रखना, जब आप मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल करते हो तो साथ ही में आपको 1 हफ्ते के अंदर क्लाइंट का वकालतनामा प्राप्त कर वो दाखिल करना जरूरी होता है। सो मेमो ऑफ अपीयरेंस ये पर्पस सर्व करता है कि आज आपके पास वकालतनामा आप प्रोक्योर नहीं कर पाए क्लाइंट से, मगर भविष्य में आपको मिलने की संभावना है, तो आज मेमो ऑफ अपीयरेंस के भरोसे आप अपीयर हो सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह सेनगर, वेलकम। आप कुछ पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट काउंसिल मैक्सिमम कितनी बार अपना काउंटर सबमिट करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से टाइम मांग सकता है। ओके, नॉर्मली 2-3 बार ये होता है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट काउंसिल ने कोई रिप्लाई दाखिल कर दिया, उसके ऊपर पिटिशनर ने रिजॉइंडर दाखिल कर दिया, और वो रिजॉइंडर में अगर ऐसी कुछ बातें आई जिसका रिप्लाई देना आवश्यक है, तो गवर्नमेंट काउंसिल सर्टनली टाइम मांग सकते हैं और कोर्ट्स देते भी हैं। अब उस रिप्लाई पर भी मान लो पिटिशनर ने कोई और कुछ एफिडेविट फाइल करके नई बातें सामने लाई, फैक्ट्स मैं कह रहा हूँ, नई फैक्ट्स सामने लाई, सिर्फ आर्ग्यूमेंटेटिव बातें नहीं, अगर ऐसी कुछ फैक्ट्स लाई जो काउंटर करना जरूरी है, तो फिर एक बार गवर्नमेंट काउंसिल समय मांग सकता है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि जितनी भी बार जरूरत है, जेन्युइनली जरूरत है, उतने बार गवर्नमेंट काउंसिल टाइम मांग सकता है और कोर्ट्स देते भी हैं। मगर हर बार कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट काउंसिल को कि क्यों वो टाइम और जरूरी है। तो वो कन्विंस वहां के फैक्ट से या उनके प्लीडिंग से कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट। विजय कुर्री जी, वेलकम। आपका कुछ प्रश्न है? सर, न्यायालय से गलत धारा का नोटिस आए तो क्या कर सकते हैं? तो इतना ही कह सकता हूं अभी कि आप वो उसका जवाब दे सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं कोर्ट को कि देखिए कैसे गलत नोटिस भेजा हुआ है, उसको करेक्ट करने की स्टेप्स ले सकते हैं। अब ज्यादा डिटेल्स आपने बताई नहीं, तो आपके सवाल का जवाब इतना ही बता सकता हूँ। स्वप्निल फिर पूछते हैं, काइंडली एनलाइटन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर्स फॉर रिसर्च ऑफ जजमेंट। यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जब मैं जूनियर था 91 में, तब ये सब सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। हम लोग डाइजेस्ट निकाल निकाल के, शेल्फ से निकाल निकाल के उसमें से पॉइंट्स ढूंढते थे। अभी सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, तो ये तो रियली इट्स मतलब मैजिक। I really always get fascinated by these things, you know. मगर एक बात मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर्स में आप जजमेंट रिसर्च करने से पहले सेक्शन, ओरिजिनल सेक्शन जो है, ऑफ कोर्स अगर सेक्शन पर बेस्ड रिसर्च है, तो बेयर एक्ट से ओरिजिनल सेक्शन पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद अगर हो सके तो एक अच्छे ऑथर की कमेंट्री पढ़कर
उसके क्या-क्या इंटरप्रिटेशंस इसके पहले हो चुके हैं, वो जान लें। और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर्स में आप रिसर्च करें, वो पॉइंट के सर्च टर्म्स डालकर। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग भी जानते ही होंगे। लीडिंग है एससीसी ऑनलाइन, या अभी उसकी वेब एडिशन भी है, वो सॉफ्टवेयर है। बाद में बहुत सारे हैं हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र लॉ जर्नल का सॉफ्टवेयर है, ऑल एमआर का सॉफ्टवेयर है, और बीसीआर के भी Manupatra is है। also a good one, sir. हाँ, Manupatra. मनुपात्र, ओके, वो भी है। ये मनुपात्र वगैरह नॉर्मली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लॉयर्स भी करते हैं, मेरे पास भी मनुपात्र था पहले, अभी नहीं है। बट एससीसी एंड ऑल एमआर, ये दो मैं मेरे पास है, और हमारे ई लाइब्रेरी में तो सभी है। Softwares are really helpful in searching the judgment. At the click of the button, you get so many judgments available. मगर उसमें से भी देखिए, आपको माइंड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। मैकेनिकल कोई भी काम करना नहीं चाहिए। मतलब आपने कोई सर्च टर्म डाली और उसमें सॉफ्टवेयर ने आपको 100 रिजल्ट्स दे दिए, तो 100 के 100 काम के होंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। माइंड अप्लाई करके आपके केस के पॉइंट को कौन सा एप्लीकेबल है, फेवरेबल और अगेंस्ट दोनों, वो आपको ढूंढने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, और बाद में जजमेंट के टेक्स्ट से जाना है, और फिर उसमें से सिफ्ट करके, मतलब उसमें से चुनकर आपको ये डिसाइड करना है कि विच एग्जैक्टली यू शुड साइड बिफोर द कोर्ट। सॉफ्टवेयर्स आर रियली हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड, अपना समय बहुत कम कर देते, तो डेफिनेटली उसका यूज करें। बट पहले बेयर एक्ट, बेयर प्रोविजन, उसके बाद अच्छी कमेंट्री से उसका इंटरप्रिटेशन, उसके वेरियस नुआंसेस जो होंगे वो समझ लीजिए, एंड देन गो टू सॉफ्टवेयर्स, एंड देन गो टू इंटरनेट। इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं कई बार, बट इट शुड नॉट बी द अदर वे राउंड, वो सीक्वेंस में होने चाहिए जो अभी मैंने बताया। तो ये बातें थी इम्पोर्टेंट। और कौन ज्वाइन हुए दोस्त लोग? पंकज चेंडे, वेलकम। इमैनुअल दलाई, गुड इवनिंग, वेलकम। Okay, Swapnil, Swapnil, you are asking really nice questions. 3 books you want to suggest apart from law books? Oh, certainly there are so many books, but now you are asking me about 3 books. Okay, let me think. पहले तो मैं एक बात सभी यंग दोस्तों को बताना चाहूंगा कि लॉ के अलावा भी बहुत सारा ऐसा फील्ड है जो आपने पढ़ते रहना चाहिए। You should always be reading. A lawyer must be a reader, good reader. लॉ बुक्स के अलावा पूरी दुनिया है ना। मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है करीबन 2000 किताबों, अपार्ट फ्रॉम लॉ बुक्स। आई लव रीडिंग, एंड एवरीवन शुड, एवरी गुड लॉयर शुड लव रीडिंग। तो फिक्शन पढ़ना ही चाहिए, ऑफ कोर्स फिक्शन पढ़ें, स्पेशली यंग डेज में, मतलब कॉलेज डेज में वगैरह फिक्शन ज्यादा पढ़ना होता है। बट जैसे आप लॉयर बनते हो तो थोड़ा सा वो बुक्स पे आप जाइए जो नॉन फिक्शन है, जो आपको बिल्ड करती है। तो मेरी 3 फेवरेट बुक्स अपनी पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, ओके। वैसे तो बहुत सारी लिस्ट लंबी रहेगी, बट फिर भी मैं तीन तीन चुन कर बताता हूँ। तो ये 3 बुक्स ने अ, बहुत मदद की मेरी। जब मैं यंग लॉयर था तो मैंने पढ़ी थी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दैट वाज फर्स्ट। कई लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट दैट बुक हैज बीन अ क्लासिक in helping you build your personality, in helping you uh, dealing with people. क्योंकि हम वकील अगर हैं, हम वकालत करना चाहते हैं, तो हम किसके लिए करना चाहते हैं? खुद के लिए नहीं ना, लोगों के लिए। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग पर इट इज अ फैंटास्टिक बुक, क्लासिक। वैसे डेल कार्नेगी की सभी बुक्स बहुत बढ़िया है। तो दैट वाज माय फर्स्ट। दूसरी जो बुक इवेंचुअली पढ़ने में आई, वो है स्टीफन कॉवी नाम के ऑथर की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक है जिसने बहुत इम्पैक्ट किया मेरे पर।
तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल क्या है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा उसके बारे में। और थर्ड बुक आई वुड से बाय जैक कैनफील्ड, 25 सक्सेस प्रिंसिपल्स। अब ये क्योंकि स्वप्न ने 3 किताबें पूछा, तो मैंने 3 नाम अभी जो मुझे बेस्ट लगी वो मैं बता दिया। बट उसके अलावा कई सारी बुक्स है, बुक्स ऑन वोकेबुलरी बिल्डिंग, and then books on, I think, good biographies of eminent lawyers you should read, and so many books on mind power, like those techniques of visualization, meditation, storytelling, and whatnot, spirituality. आपने Sir, may मतलब I take my leave for just a minute? या yes बेटा, May I just take my leave for a minute? yes जाना चाहते हैं ना, no problem. Yes, sir. So these 3 books, I would say, and there would be others also. Okay, who else is there? Emmanuel Dalai. Your initiative to teach law is very good to make general public learn about law. Thank you, Emmanuel. I love making things simple, complicated things simple. क्योंकि that builds me first. अगर कोई complicated चीज मैं दूसरों को समझा रहा हूँ या समझाना चाहता हूँ, तो वो चीज complicated चीज पहले मुझे simple रहे, उसमें मैं build होता हूँ और फिर मैं शेयर करता हूँ, वो चीज मैं एंजॉय करता हूँ. So that really gives me joy. So thanks for your observation and positive comment. Welcome, Harinath. Justice system is a joke in our country. No, justice delayed is justice denied. Okay, justice in our country will be delayed for decades. That's really unfortunate thing. हरिनाथ जी, मैं एक पर्सनल ओपिनियन अपना देना चाहता हूँ. We lawyers would be very happy first. ये अगर स्पीड अप हो जाए ना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, हम वकील बहुत खुश हो जाएंगे. क्योंकि देखिए क्या है कि अ, ज्यादा लोगों को हम सर्विस दे पाएंगे, ज्यादा केसेस कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को कोर्ट्स भी न्याय दे पाएंगे. मतलब रियल जस्टिस होगा, स्पीड अप होगा. अब ये जो है जस्टिस डिले जो हो रहा है, दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट पार्ट. आई रियली फील ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट. एंड आज की जो सिचुएशन है ना, वो देख के ऐसा रियली लगता है कि it will be delayed for decades. It should not happen like that. But we are all really stuck. I just hope कि वो टॉप लेवल पर इसके बारे में कुछ चीजें हो रही हैं, हो रही होगी. खैर, इसके लिए एक अलग वेबिनार ही करने जैसा ये टॉपिक है, तो अभी मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता हूँ. व्हाट यू से, आई क्वाइट एग्री विद यू. और कौन है? संजय सिंह गंगोला. हाँ, हेलो, वेलकम. वैभव राव, वेलकम. हेलो गणेश जी. हेलो एस रमन जी. हाउ टू फाइल petition by NGO, whether every petition is required resolution from government body. So filing petition before High Court. Preferably yes. Not though it's very strictly necessary, but preferably yes. Dhirendra Singh Sengar, thank you. Welcome. Vijay Kri, welcome. एडवोकेट विशाल, वेलकम. हाँ, अरे हाँ, आप तो है ही यहाँ. जजमेंट को कैसे किसी मैटर के लिए कंसिडर करनी चाहिए, बेल्स, अपील्स, रिवीजन एक्सेट्रा. हाँ, दैट्स रियली अ गुड क्वेश्चन विशाल. वैसे फ्रेंड्स, अभी मैं और 15 मिनट्स रहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 hour 15 मिनट्स आर ओवर. मेरा इरादा था 1 घंटे के लिए मैं रहूंगा, बट चलो ठीक है, 1.5 घंटा शुड बी क्वाइट सफिशिएंट. तो इसका जवाब मैं जल्दी दे देता हूँ. जजमेंट को कैसे किसी मैटर के लिए कंसिडर करनी चाहिए, बेल्स, अपील, रिवीजन एक्सेट्रा में. तो देखो, मतलब आई 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 अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू आस्क कि कैसे कोई जजमेंट को हम रिवीजन में, अपील में वगैरह चैलेंज कर सकते
देखो बेल में तो कोई जजमेंट चैलेंज वगैरह ऐसी कोई चीज होती नहीं। बेल एप्लीकेशन ये एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन होती है, इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। तो उसमें कोई जजमेंट वगैरह ऐसा होता नहीं है। हाँ ठीक है, आप लोअर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, मगर दैट्स नॉट एन अपील, दैट्स एन इंडिपेंडेंट बेल एप्लीकेशन आफ्टर यू सफर a rejection from the फर्स्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशंस कोर्ट आई मीन। अपील और रिवीजन में आप चैलेंज करते हो जजमेंट को, यस। तो वहां पर देखिए, बिफोर यू चैलेंज इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग विच एवर द लॉ टेल्स यू टू गो एट, इट मे बी अपील और इट मे बी रिवीजन, तो उसका स्कोप क्या है ये पहले आप जेहन में बिठाइए। अपील और रिवीजन दोनों का स्कोप डिफरेंट होता है। अपील का स्कोप वाइडर होता है, रिवीजन का स्कोप रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो वो स्कोप ध्यान में रखते हुए आपको आपके ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज अगेंस्ट दैट जजमेंट आर टू बी मेड आउट। तो ये कैसे आप कर सकोगे? बाय कीपिंग इन माइंड द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर jurisdiction, the jurisdiction of appeal, or it could be revision, or it could be review also. अपील्स में एविडेंस रीअप्रिसिएट किया जाता है। अपेलेट कोर्ट कंप्लीट एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट के सामने था वो कंप्लीटली खुद भी रीअप्रिसिएट कर सकते हैं। रिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते। रिवीजन में बेसिकली जुरिस्डिक्शनल एरर क्या है क्या नहीं ये देखा जाता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप जो जजमेंट चैलेंज करना चाह रहे हो उसके ग्राउंड्स निकाल पाओगे, अप्रोप्रिएट ग्राउंड्स। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे। इफ यू वांट टू फाइल अ रिवीजन देन यू विल नॉट draw grounds which are available for appeals. You will stop yourself from drawing those grounds which are available for appeals. Or if you are drafting an appeal for challenging that judgment, then you will be drafting the grounds of appeal only, not of revision or not of review. So that is how you should consider any judgment, challenging it in appeal revision. So I hope I have answered your question. संजय सिंह गंगोला का भी कोई प्रश्न है। योर केस में सिर्फ पिटिशनर अपीयर हो, योर प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट अपीयर ही ना हो डिस्पाइट सर्व्ड। हाँ तो अच्छा है ना, वो वन साइडेड हो जाएगा। सिर्फ पिटिशनर अपीयर हो रहा है और जो प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट है इफ ही चूजेस नॉट टू अपीयर then the court will be left with no option but to decide the case in absence of the respondent. And there are fair chances that in that situation the case may go in your favor, though there is no such guarantee, because ultimately even if the respondents do not appear, the court would be considering the case on its merits. But the chances of the case getting in your favor are more in this kind of situation. So be happy and wish you all the best अगर ऐसी situation आपके case। Abhijit Deshmukh, welcome. How judges prepare a file before arguments by advocates so we can argue before courts? Okay, that's really an interesting question. Judges केस कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो भाई ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो जज नहीं हूँ, बट कुछ जज दोस्त है या कुछ जजेस के साथ कभी बातचीत हुई है, उस बेसिस पर मैं थोड़ा सा इस पे बता सकता हूँ कि जजेस भी पहले केस पढ़ते हैं और उनके जो टाइम लिमिटेशंस होते हैं उसमें वो केस पूरी की पूरी एंड टू एंड, पेज टू पेज नहीं पढ़ पाते। तो वो क्या करते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, वो उस केस में जो सिनॉप्सिस दिया होता है वकीलों ने, वो सिनॉप्सिस पढ़ते हैं और केस में जो इम्प्यून जजमेंट वगैरह है उसको थोड़ा सा पढ़कर समझ लेते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर मेड आउट बाय द काउंसिल इन दिस केस, उतना समझ लेते हैं। और बाकी जो गैप्स हैं, गैप्स तो दूसरे दिन लॉयर्स फिल अप करते हैं। दैट इज हाउ दे, एंड विद देयर ट्रेन्ड माइंड दे अंडरस्टैंड द केस। अब ये उनकी थॉट प्रोसेस है। अब हर जज की ऐसी ही होगी ऐसा नहीं, कुछ जजेस थरोली पढ़ते हो,
कुछ जजेस जैसे मैंने बताया वैसा पढ़ते होंगे और कुछ जजेस थोड़ा सा कम पढ़ते होंगे। अब हम जब प्रिपेयर करते हैं हमारी केस, तो हमें वही माइंडसेट से तैयार रहना है कि जज ने केस थरोली पढ़ के रखी है ना? ये एक आपका थंब रूल होना चाहिए जब भी आप केस तैयार करते हैं एज अ लॉयर फॉर आर्ग्यूइंग बिफोर द कोर्ट। यही अजम्पशन में होना है आपको कि जज साहब ने केस पूरी पढ़कर आए हैं। ऐसे ऐसे तैयारी से जब आप जाओगे तो आप केस अच्छे से कर सको। यू विल बी एबल टू enlighten the honorable judge with your preparation, with your arguments, with your research. And that may impress the judge also. I mean, impress ये एक secondary चीज हो गई. That may help you have the case in your favor mostly. If you have prepared your case well, that may convince the court. So so in addition to convincing the court, in addition to clarifying your case to the court, which is the main objective, आप कोर्ट के ऊपर एक फेवरेबल इंप्रेशन भी डाल सको। ये हो सकता है। इट मे create a very positive image about you in the court's mind. तो ये assumption से ही हमेशा केस को प्रिपेयर करनी चाहिए और जब भी केस लगे उसके एक दिन पहले तो जरूर उसको रिवाइज करना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमरो लियो, वेलकम। हाउ टू डू लीगल रिसर्च दैट फिट्स आवर केस इन हैंड। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा समझा इस बारे में। तो लीगल रिसर्च हमारे सामने जो केस है उससे रिलेटेड कैसे करें, इनका ये प्रश्न है। तो सिंपल है, देखिए। पहले तो आपकी जो केस है, दैट केस मीन्स व्हाट? फैक्ट्स, द फैक्ट्स ऑफ द केस। So once you know the facts of the case, you have to figure out, you have to decide which area of law it goes into. For example, the facts of your case are relating to contract or say breach of contract and the performance of contract. Then you have to study what? You have to study the Contract Act. I'm giving you an example. Huh? You have to study Specific Relief Act. You have to study Civil Procedure Code. Or it may be some provisions of Transfer of Property Act are involved. So the facts of your case give you a clue about sorry, एक थोड़ा सा break था वहाँ. The facts of your case give you a clue about the area of law that is applicable, and then you do research. You study the basic provision, then you study the interpretations of those provisions made by various courts, and then you find out case laws, you read commentaries, and that's how you go on doing legal research. That's really a good question. I hope I have answered it in the short time that is available to us. इस पे डिटेल में भी कभी और बात हो सकती है। देवर या त्रिपाठी पूछते हैं, क्या सर आप डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं हूँ। मतलब मैं डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट हूँ। आई डोंट कॉल माई सेल्फ senior advocate. I just call myself an experienced advocate. I'm having 30 years of experience as a practicing lawyer. Mohammad Shakir, welcome. बोलते हैं, good evening sir. Now I am going to enroll in Tamil Nadu and Pondicherry Bar Council. I'm having what to choose, whether civil or criminal. As you are senior and following you, sir. Kindly read reply. Certainly I'm reading. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वकील हो गए। और कौन से एरिया में प्रैक्टिस करना है ये तो आप ही को डिसाइड करना है, मैं बता के वो ठीक नहीं रहेगा। यू सी, आप यू जस्ट टेस्ट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट टू सी
I mean, see, where do you feel interested? दोनों कोर्ट्स में जाकर देखिए, सिविल में, क्रिमिनल में, केसेस अटेंड करके देखिए. आस्क योरसेल्फ, कहाँ मजा आ रहा है, कहाँ मजा आएगा, किस टाइप की लाइफ कहाँ होगी, and you will get answer to your question. गणेश कराड़, वेलकम. हेलो गणेश, वो पूछते हैं, just enrolled as an advocate. I want to practice in Bombay High Court. I have little information. Please guide. Oh, welcome. And that's really a good intention to start in uh, Bombay High Court. But थोड़ी देर पहले जैसे मैंने समझाया, गणेश जी, first have an experience of trial court also before you directly jump to High Court. That's the first thing. थोड़ी देर पहले मैंने इस पर बात किया हूँ. After this video is finished, ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आपको मेरे चैनल पर. Watch the entire video and also understand the guidelines that I have given. Okay. Devarya, I have answered your question. Swapnil, yeah, welcome Swapnil. Manoj पूछते हैं, I want to know from you that in Bombay we need to Marathi to practice in courts. हाँ, local courts में practice करनी है तो you must be familiar with vernacular language, local language, Marathi language. Then only you can effectively practice in the lower courts. बात है बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में नहीं होती है लोकल लैंग्वेज, नहीं होती है, इंग्लिश यूज होती है. यू शुड नो इंग्लिश वेरी वेल. दैट इज दैट. वंदना पूछती है, व्हाट इज योर टेक on AI entering the judicial system and even passing judgment? Passing judgment, certainly not. I am deadly against it. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे जजमेंट देना, ये तो गलत ही होगा. But artificial intelligence, of course, must be used for case management system. To that extent, I would definitely advocate it, suggest, support it. But the judgment delivery has to be through human mind only. And they may at the most give a clue. Artificial intelligence may at the most give a clue as to where the judgment, uh, where can it incline, where the verdict can get inclined toward. इतना दे सकते हैं, but not the final verdict. It must be through human mind only. But that's a good question, Vandana. Futuristic kind of question. देवरिया पूछते हैं, मेरा सर्विस मैटर एक क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई. देवरिया, मैं ये प्रश्न कहीं और रिप्लाई करूंगा. आज का ये जो थीम है ना हमारा यहाँ पर आज, प्लीज मुझे माफ करना. और कौन कौन ज्वाइन हुए हैं, लेट मी जस्ट चेक. लक्ष्मीकांत जायसवाल, हेलो लक्ष्मीकांत. शक्तिराज चोपड़ा, हेलो. नेथस्ट, हेलो. मोहम्मद कमार अलाम, हेलो. इनका कुछ प्रश्न भी है. समझौता वाला केस में राजीनामा एप्लीकेशन को डाला गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है. तो हो जाएगी ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए. संजय, गवर्नमेंट काउंसिल कभी वकालतनामा फाइल की नहीं ना करे केस में और प्राइवेट रिस्पोंडेंट भी एब्सेंट है डिस्पाइट बीइंग सर्व्ड पिटिशनर. तो देखो, गवर्नमेंट काउंसिल को वकालतनामा फाइल करने की जरूरत नहीं होती. मैं खुद गवर्नमेंट लॉयर था कई साल हाई कोर्ट में, नागपुर बेंच और बॉम्बे हाई कोर्ट. आई नो दैट. मेमो ऑफ अपीयरेंस सिर्फ दाखिल होता है. एंड इवन वैसे मतलब गवर्नमेंट काउंसिल्स वैसे भी अपीयर हो सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपोनेंट अगर अपीयर नहीं होता है रिस्पोंडेंट काउंसिल, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इन एब्सेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट द कोर्ट में प्रोसीड विद द मैटर. और उसका जो भी implication उस पे होगा वो होगा. मैटर में गो इन फेवर ऑफ पिटिशनर या ex parte ऑर्डर दे में पास. दानिश अंथाल, वेलकम. What we shall prioritize at the outset of our career, judiciary preparation or start practicing at the trial? मैं तो कहूंगा दोनों. If you intend to join judiciary, you must also have experience at the trial court, and while you are
taking that experience, gaining that experience. We should also be preparing for judiciary side by side, क्योंकि दोनों चीजें तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी ही है. आप प्रैक्टिस कर रहे हो लॉ की, तो आप जज के सामने खड़े होते हो, लॉ ही पढ़ते हो. जुडिशियरी प्रिपरेशन में आपको लॉज ही पढ़ने हैं. So both are complementary to each other. Both you should take up side by side. Danish. I hope I have answered your question. तो 1.5 घंटा हो चुका है दोस्तों. मन तो नहीं कर रहा है जाने का. मजा आ रहा है आप सभी के साथ बात करने के लिए. आप सभी आज यहाँ पर ज्वाइन हुए, जो दोस्त ज्वाइन हुए सभी को आई एम रियली थैंकफुल, रियली हैप्पी दैट यू ऑल ज्वाइन and you asked so many interesting questions. And I think we should keep doing this regularly. है ना, शौनक? Definitely, sir. Definitely. So I think I should take leave. अगर किसी का प्रश्न रह गया है तो हम उसको फटाक से कवर कर लेते हैं and then we will say goodbye to each other today. विशाल का प्रश्न है, विटनेस आ ही नहीं रहा कोई केस में, उसको एज अ डिपेंडेंट लॉयर जजेस को ड्रॉप करने के लिए कह सकते हैं. विटनेस आ ही नहीं रहा है तो एज ए डिपेंडेंट लॉयर जजेस, हाँ बिल्कुल करने को कह सकते हैं. आ नहीं रहा इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल है बिल्कुल, मगर उसके ना आने का इम्प्लीकेशन अगर आपके केस पे एडवर्स हो रहा है डिफेंडेंट डिफेंस पर, तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना. अगर वो आना ही है तो उसके बारे में वो लॉयर समन्स निकलवा सकता है. तो समन्स में भी नहीं आ रहा है तो वेलेबल Summary. वारंट जारी हो सकता है. वेलेबल बेसिस नहीं आ रहा तो नॉन वेलेबल को हाजिर तो करा ही जा सकता है. हाँ, तब अगर उसके ना आने से केस पर आपके एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है तो. अगर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, ना आए, गिव अप कर दें. दैट दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द lawyer can inform the court that he is giving up that witness. ओके मोहम्मद जी, थैंक यू. तो सभी को थैंक यू वेरी मच. बहुत मजा आया मुझे बात करके आप सभी से. मोहम्मद शफी, मनोज सेठ and आदेश लोखंडे. Girl has not completed 18 years of age before that Shakhar could have been साखरपुडा have taken place. Can it नाही साखरपुडा झाला फक्त ना. साखरपुडा मतलब यू आर टॉकिंग ऑफ एंगेजमेंट. सिर्फ एंगेजमेंट हो चुकी है तो एंगेजमेंट को तो कोई बार नहीं है ना. इट कैन टेक प्लेस इवन व्हेन द एज ऑफ मैरिज इज नॉट कंप्लीटेड. दैट इज ओके. ऑफेंस तभी होगा जब एज ऑफ मैरिज कंप्लीट ना होते हुए भी मैरिज करिए. साखरपुडा वगैरह करून ठेवायला काही प्रॉब्लम नहीं. शिव शंकर, हाँ जी, वेलकम. अभी तो जाने का टाइम हुआ एक्चुअली, बट स्टिल वेलकम एंड बाय बाय ऑल्सो. अनिल परमार, हिम्मत लाल, आस्क्ड, यस, करियर ही सही वर्ड है, इज नॉट कैरियर. बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं. द वर्ड इज करियर, मतलब हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र जहां बनाना चाहते हैं, दैट इज करियर, इट्स नॉट कैरियर. बहुत से लोग ये कंफ्यूजन करते हैं, स्पेशली लॉयर्स ने और बडिंग लॉयर्स ने तो ऐसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं करने चाहिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में, क्योंकि शब्दों ही का ही तो खेल है. वर्ड्स और टूल्स ऑफ ट्रेड में, है ना शौनक? निशांत, यस निशांत, थैंक यू. ओके, सो गुड बाय दोस्तों. मजा आ गया आपके साथ बात करके. और जो कुछ और प्रश्न होंगे आप निकाल के रखें, मैं आते जाऊंगा बीच बीच में. थोड़ा सा अभी मैं डिसाइड किया हूँ कि बीच बीच में दोस्तों के साथ, यंग लॉयर फ्रेंड्स के साथ बात करनी चाहिए. दैट्स हाउ वी विल कंटिन्यू चैटिंग. आपके कुछ सजेशंस होंगे तो जरूर मुझे वीडियो के नीचे देना. ये वीडियो लाइव जाएगा तब. ओके शौनक, बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर. Sir, good night. Good night. Sir. It was indeed a pleasure interacting with you, sir. थैंक यू, सेम हियर. I would have really considered myself lucky had I been residing in Nagpur. My pleasure.
चलो वहां है तो भी तुम तो अच्छे ही सीनियर मिल ही जाएंगे तुमको, there is no problem, तो मिल ही जाएंगे. Okay, so friends, I'm now ending this broadcast. Bye, good night, Good take night. care, keep smiling, be happy. Bye.